How do you go further? Dilshad bhai, So the whole idea why these two people are pointing a finger to each other, and on the right hand side you will see a very famous, kind of a painting which is universally in many places has been displayed. It shows that the unity in diversity. Now, this is a very big theme, uh, and which Allah has propagated this theme through our religion. The Surah Huzurat, Ayat 13, it beautifully explains Mighty Lord in His complexity and diversity of this world as to how we can unite among one another with all these diversities of genders, race, tribes, language, and nations. It's jumping. No, it's jumping. So, the name of the person is Ghanim al-Mufta. Ghanim al-Mufta was born in May 2002 in Qatari capital Doha as one of the twin brothers, and from birth he suffered from the disease called as a caudal retraction syndrome. His positive outlook on the life to his mother is he is attaching or attributing it to his mother, the learning, persistence, and the patience from his father. Al-Mufta aspires to join a diplomatic work in his country. He was a goodwill ambassador for the Good Hands Foundation towards the Asia in 2015, and he also participated in the United Nations Youth Forum in 2015. Ghanim also issued many motivational books, publications which helped many people with disabilities to overcome difficulties they suffered from. As an entrepreneurial spirit, he has his own ice cream company called as a Garissa Ice Cream, a project inspired by his mother. To date, his company has 6 branches and 60 employees. With the support of his family, Ghanim also founded Al Ghanim Foundation, a charity organization that provides wheelchairs to disabled people around the world. In 2017, Ghanim al-Mufta achieved the blessing of performing Umrah without using a wheelchair. He used to play football wearing gloves during his student days. Apart from the football, he also enjoys diving and has shown a sense of diving up to 200 meters in the sea. In addition to sports and the social brilliance, Ghanim currently continuing his university studies, where he majored in political science, and his ultimate goal is to become a diplomat. He is also a major social media star with more than 7 million followers on TikTok, more than 3.3 million on Instagram, and nearly 1 million subscribers on the YouTube. So on April 1st, 2022, Qatar World Cup Supreme Committee announced the appointment of Al-Mufta as an official ambassador for the tournament, which is being held for the first time in the Arab world. Now let's look at this visual, audio visual. Can you just show me? Show this. Sir, sorry to interrupt. Can we please make it as a combination of Urdu, English, both, so that there are some audience who are yes, sir. Yeah. हाँ, तो ये बहुत जरूरी है हमको कि ये समझना कि ये जो अपाहिज लड़का जो था वो दुनिया के सबसे बड़े वर्ल्ड कप कमेटी फॉर फुटबॉल उन्होंने इसको चूज किया। तो ये कारण क्या है इसको चूज करने का, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। बिकॉज आज का जो सब्जेक्ट मैटर जो है, जो एक्सलेंस है, वो एक्सलेंस से इस आदमी की पर्सनालिटी जुड़ी हुई है।
अगर हम इसको समझ सकते हैं तो फिर हम अपने जिंदगी में एक्सलेंस लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो कैरेक्टर्स है उसके उसके जो अलग अलग पहलू हैं उसके जिंदगी के, कि अपाहिज होते हुए भी उसने आइसक्रीम कंपनी खोली है, उसने फाउंडेशन तैयार किया जिससे वो डिसेबल्ड लोगों को मदद कर सके, और उम्रा किया है विदाउट व्हील चेयर, और फुटबॉल खेलता है, डाइविंग करता है, और तरह तरह के स्टडीज करता है, और वो एक अच्छा एम्बेसडर बनने की सोच रहा है। तो इसको जरा वीडियो जो दिखाएंगे आप अगर दिखा सकते हैं तो देन वी कैन सी एक्चुअली फिजिकली कि हाउ दिस पर्सन इज गेटिंग डेवलप्ड। दिलशाद भाई दिखा सकते हैं क्या वीडियो? इसको मिनिमाइज करके फिर वीडियो को खोल सकते हैं क्या? नहीं, वो वीडियो अलग से Maybe I जाएगा। can share, sir. Yeah, Maybe please I do can that. share. Give me a minute. Yes, Yeah. yes. These videos, there are a large number of videos which are available on YouTube. I would request people to look at it separately because he is a kind of a role model for many children who would like to become an excellent. ये तो इसमें नहीं है, वीडियो इसमें नहीं है, ये पीपीटी है। Yes, sir. अभी शेयर हुआ सर? नहीं अभी, हाँ अभी आ गया। यस, एक्सलेंट। आवाज थोड़ी बढ़ा सकते हैं क्या? देखिए أكيد كنتوا متوقعين إني بدخل على كرسي متحرك. لا، لأني دايما أحب أمشي على يدي. الله أنعم علي بنعمة كثيرة، منها قوة يدي. أحب أحس بنعم الله علي، وأحب أعيش واقعي اللي أشوفه جميل. देखिए ये पहाड़ चढ़ रहा है, वो सबसे ऊंचा पहाड़ है और सीढ़ियां नीचे आ रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। ये यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल गई है उसको। كان عمري يومين في هالصورة ومبتسم. जब वो पैदा हुआ था 2 दिन के बाद में वो हंसना शुरू कर والجميع दिया, استقبل قدومك للدنيا. लेकिन लोग बोल रहे थे कि भाई ये अगर गुजर जाए तो अच्छा है, ताकि जिंदगी की उनके माँ बाप की और उसकी ولكنك तकलीफ कम हो استقبلت जाए। الدنيا بابتسامة. लेकिन माँ ने उसको संभाला है और खुशियां भर दी है उसकी जिंदगी में, हौसला बढ़ाया है। फादर और मदर देखो डाइविंग किया उसने पानी में, एक्सरसाइज कर रहा है। वो पैरा ओलंपिक में मेडल लेना चाहता है। So these are the things which people in difficult time they can do this. Now let's come back to the PPT. Dilshad bhai, please share PPT. Yes. So now we are talking about the excellence. So we must understand what is the meaning of the excellence. Again, next slide, please. So by definition, excellence is a way of life that requires strong emotional intelligence, focus, passion, and energy. The journey towards excellence can be challenging, but you will progress quickly when you make the effort to develop habits that will allow you to thrive. मतलब ये है कि ये जो एक्सलेंस आता है वो सबसे अपने दिल से जुड़ा हुआ है। अपना इंटेलिजेंस जो है, अपनी जो नॉलेज है, अपना जो दिमाग है, उसको फोकस करके हमारे पैशंस जो है, हमारी जो
जज्बात है और हमारी जो ताकत है, एनर्जी है, मेंटल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, इनको समेट के एक साथ करके जब आदमी कुछ काम करता है तो वो उसमें एक्सलेंस आने की उम्मीद होती है। और ये जो जर्नी है कि अपने आप को काबिल बनाने की, खुद ही को बुलंद कर दे इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता दे तेरी रजा क्या है। तो जब आदमी कोशिश करने शुरू कर देता है तो उसको मजा आने लगता है, क्योंकि कि he can keep on developing skills and he then see the results of his hard work by himself, and therefore he starts enjoying it. And then if you develop certain good habits, then it becomes easier, it's faster. So habits जो है ना बहुत important चीज है। जैसे कि एक साइंटिस्ट ने बताया है कि एक हैबिट अगर अपनी जिंदगी में लानी है तो उसको रिपीट करना जरूरी है। हर रोज वो जो हैबिट लाना है उसको अगर हम रिपीट करते रहे, रिपीट करते रहे, रिपीट करते रहे, और वो कंटिन्यूअसली अगर 1 महीना रिपीट कर दे तो वो जिंदगी का एक हिस्सा बन जाते हैं। फिर उसको बाद में हमको पर्पजली उसको रिपीट नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप जिंदगी में आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर सुबह 5 बजे उठकर हम लोग तैयार होकर नमाज के लिए अगर उठने की कोशिश करते हैं तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन तकलीफ होती है कि भाई मैं अपनी नींद जो है ना उसको खराब करके मैं उठने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर जिद पकड़े हम लोग और कोशिश करें, रिपीट करते रहे 1 महीने के बाद में, तो हमको फिर 5 बजे उठना आसान लगना शुरू हो जाता है और फिर हम जिंदगी भर सुबह 5 बजे उठने की कोशिश करते हैं। वैसे ही अगर हर एक आदमी ऐसी एक एक हैबिट, फॉर एग्जाम्पल सुबह उठना, झूठ नहीं बोलना, नमाज पढ़ना, कुरान जो है ना उसकी तिलावत करना और उसको उसका मीनिंग समझना, हर रोज अब हम 1 आधा घंटा उस पर गौर करें तो हम अपने जिंदगी में कुरान का मतलब समझे और उसको अमल में लाने की कोशिश करें। तो दीज आर द हैबिट्स। एंड हर एक आदमी हर महीने में अगर एक हैबिट लाना शुरू कर दे तो 12 महीने में 12 अच्छे हैबिट्स शुरू हो जाते हैं और 2-3 साल में पूरी जिंदगी का उसका एक ढांचा जो अच्छे चीजों पे बसा हुआ है और जिसकी वजह से तुम प्रोपेल कर सकते हो, तुम जंप कर सकते हो, तुम एक उछाल मार सकते हो और जिंदगी के हर मुश्किलों को आसान कर सकते हो। तो ये हैबिट्स बनाना, अच्छे हैबिट्स बनाना पर्पजली विद द इंटेंशन, हमारे दिल में उसको हैबिट बनाने की एक आदत सी लगनी चाहिए, तब जाके वो जिंदगी के जितने भी मुश्किलात हैं, डिफिकल्ट चीजें हैं, वो आसान होने शुरू होते हैं। तो ये मकसद है कि एक्सलेंस अगर करना है तो हमारे पास सही रास्ते पे चलने का तरीका मालूम होना चाहिए और हमारे आदतें अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें क्या की प्रिंसिपल्स हैं जो इम्पोर्टेंट चीजें जो ध्यान देने लायक है, वो है हैव अ हंगर फॉर एक्सलेंस। हमको भूख होनी चाहिए, मतलब हमको चाहिए कि मैं अच्छा बनूं, अच्छा बनूं। रोज हम बात में हम अपने आप को कहते जाएं कि मैं सबसे बेस्ट बनूंगा, सबसे बेस्ट बनूंगा, और उसके लिए मैं कोशिश करते रहूंगा। देन बेंचमार्क अगेंस्ट द बेस्ट। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स को, अगर वो एवरेज स्टूडेंट है तो हमारे क्लास में, अपने क्लास में जो नंबर 1 स्टूडेंट जो है उसको कैसे मार्क्स मिलते हैं, उसकी आदतें क्या है, वो क्या काम करता है, कैसे मेहनत करता है, किसकी मदद लेता है। अगर वो अपने आप को उससे तोलना शुरू कर दे और उसकी अच्छी आदतों की तरफ ध्यान दे दे तो वो भी बेस्ट हो जाएगा। मैं खुद अपनी जिंदगी में मैंने देखा है कि मैं 8-9 स्टैंडर्ड तक मैं एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था। 50-60% एवरेज मिलते थे। लेकिन क्या हुआ पता नहीं, 10th स्टैंडर्ड में और उसके पहले भी 9th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स आई कल्टिवेटेड अ हैबिट to be good with the best of the class student, and then the whole thing changed. I became number 2 in the class within 2 years time. So इस तरीके से अपने आप को बेंचमार्क कर लो, एक तुलनात्मक दृष्टि से देखो कि मैं कहाँ हूँ और मेरे क्लास में जो बेस्ट बच्चा है वो कहाँ है, और उसको
मैं भी खुद बेस्ट बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, और बिलीव दैट यू कैन डू इट, मतलब खुद पे विश्वास होना चाहिए, और बिल्ड कॉन्क्रीट स्ट्रेटेजीज एंड प्लान्स। समझ के हम लोग एक प्लान बनाना चाहिए कि मुझे बेस्ट बनने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, कैसी स्ट्रेटेजी यूज करना पड़ेगा, तो ये दिल में आना चाहिए। पेरेंट्स इसमें बहुत मदद कर सकते हैं, टीचर्स मदद कर सकते हैं, एंड लर्न फ्रॉम द बेस्ट। बेस्ट को, जो आदमी लड़का बेस्ट होता है उसका मत्सर मत करो, उसको ईर्ष्या मत करो, उसको एक रोल मॉडल की तरह देखो कि मैं इससे सीखूंगा, उसका पहलू पकड़ो और उसको जो है ना, उससे जो भी अच्छाई है उसको सीखने की कोशिश करो, ना कि उससे ईर्ष्या करो। डू नॉट लिमिट योरसेल्फ। You can overtake him because you don't have to limit. If he's getting 80-90% marks, you can get 95% marks. So don't limit yourself. Go all out, work really hard, focus your efforts. So ये जो जरूरी चीजें हैं यहाँ पे लिखी हुई है, ये एक्सलेंस के लिए बहुत मायने रखती है, तो ये करना चाहिए। Now, if excellence differentiate an extraordinary people from the ordinary people. हम देखते हैं कि जब दुनियादारी में हम फंसते हैं तो कुछ लोग झट से हमारे नजर में आ जाते हैं, और कुछ लोग जो है ना, बिना सोचे समझे, उनका बैकग्राउंड नहीं देते हुए भी उनके चेहरे पे, उनके बॉडी लैंग्वेज पे एक ऐसा तेज होता है कि वो अलग से पहचान हो जाती है कि क्यों, कि दे आर डिफरेंट पीपल बिकॉज दे हैव अर्न दैट पर्टिकुलर थिंग थ्रू द हार्ट। बहुत मेहनत करके अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाया है, और एक अच्छा इंसान के चेहरे पे एक रौनक आ जाती है, तो वो दे आर डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी पीपल। दोज हु स्ट्राइव फॉर द एक्सीलेंस विल हैव अ लॉन्गेविटी इन देयर इंडिविजुअल्स। हम बोलते हैं ना कि इंडिया में जो ऋषि मुनि जो है ना, हिमालय में जाया करते थे और अपनी तपश्चर्या करते थे। हमारा रिलीजन ये नहीं सिखाता कि तुम हिमालय में जाओ, हमारा रिलीजन ये सिखाता है कि दुनियादारी में ही सबके साथ मिलके जुल के, लेकिन फिर भी तुम अपनी तपश्चर्या कर सकते हो, एक एक्सलेंस की तरफ आप बढ़ सकते हो। कोई भी एक एम लेकर अब उसमें अगर आप मेहनत करो, उसकी अच्छाई के परखो और अच्छा लाने की कोशिश करो, तो अपने आप वो एक बेस्ट हो जाता है, और इसीलिए वो आदमी जो है ना, फिर एक अलग अपनी पहचान बना सकता है। सो एक्सलेंस इज बोथ यार्ड स्टिक, एक मेजरमेंट का एक तरीका होता है। यार्ड इज द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, तो एक आदमी की ऊंचाई कितनी है, गहराई कितनी है, ये नापने के लिए यार्ड स्टिक होनी चाहिए। तो वो यार्ड स्टिक तरह तरह की होती है कि उसका नॉलेज की है कितनी गहराई है, उसकी सोच विचार की कितनी गहराई है, ये सब समझ सकते हैं। तो यार्ड स्टिक हो जाती है, और बेंचमार्क भी हो जाती है, ये आदमी कहाँ तक पहुंचा हुआ है, ये आदमी ऑर्डिनरी है, मिडिल लेवल का है, या हाई लेवल का है। जैसे हम बोलते हैं ना कि 7 आसमान में हमारे जन्नत ही होते हैं, 6 या 7 जो है, तो हर एक की जो लेवल होती है वो लेवल आदमी तब पहुंच जाता है जब उसकी मेहनत हो जाती है। तो ये एक्सलेंस के ये तरीके होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। Now let's look at the opportunities and the development of capabilities. तो ये तो जनरल बात हुई है, अभी जो मैंने बात बताई है वो जनरल होगी। Now in front of a student or in front of a child, there are opportunities and dreams. He is carrying some dreams, his family carries a dream, and currently the conventional and present day opportunities are, for example, business में अच्छा काम करना, पैसा कमाना है, नाम कमाना है, सिविल सर्विसेज है, डिफेंस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, फाइनेंस मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, लीगल मैटर्स, हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो ये कन्वेंशनल हो गया, अब दुनिया बदल रही है। नेक्स्ट प्लीज। Now the scenario is changing very rapidly. In the last 20-30 years, the earlier days people used to only talk about 2 branches, engineering and medical. But nowadays they don't talk about medical and engineering. So what has happened is that some of the new technologies that have emerged in last 25 years,
For example, information technology. Google आ गया, camera based security systems आ गए, from the space as well as land based. Communication network बढ़ गया, WWW मतलब वर्ल्ड वाइड नेटवर्क आ गया, ऑनलाइन ऑडियो विजुअल आ गए, डिस्कशंस इन द क्लासेस हो गया, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया, 1G 5G तरह तरह के कम्युनिकेशन नेटवर्क आ गए. तो ये जो है ना, these are all vertically specialized field, and therefore the people are required to develop this further as well as to man them and to operate these kind of systems. So the new opportunities have come. नए business आ गए, space technology, satellite for communication, GPS, land survey, security, military application, mission to moon, etc. Drones, for example, nuclear technology. पूरे दुनिया अभी न्यूक्लियर की तरफ देख रहे हैं. जीरो कार्बन एमिशन के चक्कर में by 2070 India is supposed to be expected to generate a zero carbon. That means, therefore, government is now putting in a lot of effort to get nuclear power plants in the country. Currently, 700 megawatts of reactors are getting constructed, and government wants to repeat them. Say today, 10 reactors are under procurement and construction. They want to repeat this, another 10, like that. Government also is thinking about small modular reactors, and a lot of effort. In fact, Niti Aayog is doing this particular thing. Dr. Saraswat, the Niti Aayog CEO, Chief Executive Officer, has publicly made a statement, and he has conducted seminar symposium in which I have participated. And there is a big focus on the SMRs, that is small modular reactors, which are in the zone of about 100 megawatts per reactor, and such reactor will replace the old fossil fuel reactors, especially the carbon coal-based power plants, thermal power plants of say 100 megawatts, 200 megawatts. They will be. So there is a lot of focus on this renewable energy, solar, wind, nuclear, sea wave energy. These are all coming in. Incidentally, solar and wind, they are not carbon free in the ultimate cycle. And they are not as cheap as we think, because solar, if you want energy in the night time, then you will have to store it into batteries, and that batteries are very expensive. So overall cost per cycle will be high, but still we need it. Then artificial intelligence. These days, more and more things are coming into artificial intelligence, computer technology, microbiology, health. So therefore, the education, training, job definitions are changing rapidly. So पूरा scenario change हो रहा है. The career growth, pay and perks, अच्छे pays भी मिल रहे हैं इन लोगों को, perks भी अच्छे मिल रहे हैं. They are attractive, and hence parents, children have to be more aware of what is happening globally and locally, and prepared to meet the challenges. Training abroad has emerged as an attractive opportunity for parents and the students. I'll talk a little more on this particular training abroad. Then parents and students should choose what career students would like to most, and do their best. So the theme, overall theme in this particular slide is that the world has changed rapidly last 25 years. ये 25 साल में हमारी दुनिया बदल गई है. नए टेक्नोलॉजीज आए हैं, और ये नए टेक्नोलॉजी पूरी जिंदगी को डोमिनेट कर. तो अभी पहले जैसे हम लोग सिर्फ इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन छोड़कर भी दूसरे अपॉर्चुनिटीज हैं, और बच्चों में हमें ये देखना है कि बच्चों को क्या चाहता है, उसकी लाइकिंग क्या है, उसका इंक्लिनेशन क्या है. बिकॉज जब कोई बच्चा एक चीज को लाइक करता है, तो उसमें वो एक्सेल कर सकता है, उसमें एक्सेलेंस आ सकता है, बिकॉज ही लाइक्स इट, ही वांट्स टू डू बेटर एंड बेटर. उसको उसकी चाहत होती है कि मैं इसमें अच्छा काम कर दूँ. तो हमें चाहिए कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली द पेरेंट्स, इनको अपने आंखें, नजर और कान खुले होने चाहिए कि देखो दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में लोग कहाँ जा रहे हैं, और कैसे जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और इसका फायदा क्या है. तो ये अगर हम जान ले तो फिर हमारे बच्चों को हम गाइड कर सकते हैं. इसीलिए दिस स्लाइड इज मोर एप्लीकेबल टू द पेरेंट्स, and they must understand the
theme of this slide. Next. Now, obviously, once opportunities are more, जब opportunity ज़्यादा है, तो competition भी ज़्यादा है. और अगर competition में आपको सफल होना है, तो हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी और मेहनत जी जान लगा के करनी पड़ेगी. ऐसा नहीं कि भी दूसरे को मुफ्त में मिल रहा है और हमको नहीं मिल रहा है. एक जनरल रूल है अभी इंडिया में ऐसे चल रहा है. देखो, अगर एक बच्चे को अगर नॉन मुस्लिम बच्चे को अगर 100 मार्क्स मिलते हैं और उसको एडमिशन मिलता है, तो मुसलमान बच्चे को कोशिश होनी चाहिए कि उसको 120 मार्क्स तब जाके उसको एडमिशन मिले. ये अभी धीरे धीरे सिनेरियो चेंज होते रहा. गुड बैड उसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट, मोटिवेशन, मोटिव अच्छा है बुरा है, इसको सोचो मत. हमें चाहिए क्या कि अभी कंपटीशन में आज का भाव क्या है. अगर मुझे हाई जंप करनी है तो आज का भाव क्या है. 5 फीट 7 इंच है, 5 फीट 8. वालों का ये व्हाट्सएप भी फेसबुक वालों. हेलो, Yes, कैन sir. यू Yes, हियर मी नाउ? yes, please go ahead, sir. हाँ, सो हमें चाहिए कि हमें मालूम होना चाहिए कि दुनिया कैसी किस तरीके से है, हमारा एनवायरनमेंट किस लिए है, और हमें अपने बच्चों को कॉम्पिटिटिव बनाना है. So to be successful in the competition, we must know what are the opportunities and the benefits. क्या opportunities है और benefits उनकी क्या है. What you would like. Hello, sir. We can't hear you, sir. Your voice is not getting properly. Hello. Can you hear me now? Yes, sir. Hello. We can. Yes, sir. No better, sir. Okay. So I am coming closer to the mic. Okay, हमें चाहिए कि भी हमारा बच्चे को क्या बनना चाहता है, उसको समझना बहुत जरूरी है और उसको उस एरिया में सपोर्ट करना जरूरी है. इसके साथ साथ हमें ये भी जानना है कि व्हाट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट. ऐसा नहीं कि मुझे मॉनिटरिंग करना है लेकिन मैं चल भी नहीं सकता हूँ और दौड़ भी नहीं सकता हूँ जोर जोर से, तो मॉनिटरिंग नहीं हो सकता है. तो मेरी कैपेबिलिटी क्या है. मैं अगर 100 किलो का वजन उठाना है तो मुझे उतने मजबूत हाथ भी होने चाहिए. तो हमारी कैपेबिलिटी जज करना भी बहुत जरूरी है. व्हाट बेसिक क्वालिफिकेशन, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड विल पावर रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल. मतलब बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, जरूरत क्या है उसकी, हमारा उसमें एटीट्यूड क्या है. एप्टीट्यूड होना चाहिए, उसमें चाहत होनी चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, और विल पावर रिक्वायर्ड कितनी है, ये सब जानना जरूरी है. करेक्ट डायरेक्शन लेना चाहिए, लोगों ने शेयर करना चाहिए, लोगों के पास जाके डायरेक्शन मांगना चाहिए, शाय नहीं होना चाहिए. 2-3 लोगों को, सीनियर लोगों को जो जानकार है उनसे जाके मिलना चाहिए कि भाई इसमें सही रास्ता क्या है. देन करेक्ट प्रिपरेशन टू फेस द कंपटीशन, नेसेसरी रिसोर्सेस जमा करना चाहिए और डेडिकेटेड हार्ड वर्क. ये जब इसका हम लोग इंतजाम कर लेते हैं और बच्चों को हम लोग उसकी तालीम दे देते हैं, तो बच्चा सक्सेसफुल होने के चांसेस अच्छे रहते हैं. नेक्स्ट प्लीज. Now we talked about the study abroad. Now this is these days it has become very attractive, and we have seen, especially during the Ukraine war, suddenly we realized that there are thousands and thousands of students are there in Ukraine. There are many students abroad who are going and studying. Why are they going? This question comes to your mind. Next slide, please. So why study abroad? So there are multiple reasons. The better postgraduate studies abroad and then attempt to get a job and a nationality. हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है अमेरिका जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ की लाइफस्टाइल बेटर है, अपॉर्चुनिटीज बेटर है, और इसको जाने का वन ऑफ द प्रूवन स्ट्रेटेजी इज आफ्टर द ग्रेजुएशन you go there for post graduation.
Obviously, it is expensive sometimes if you don't get the scholarships, etc. If you are not in the merit and still you want to do study abroad, it's possible, but it's expensive. Okay, and then once you get post-graduation, try to do a job, short-time job, or till the time the permit is available to you, and then become a permanent member there, get the nationality. This is a standard practice which many people in America, those who want to settle down in America, they follow it. Then cheaper graduate studies for specialized courses like medicine, computer science. तो ये हमने यूक्रेन में देखा है कि जो कोर्स वहाँ 15-20 लाख रुपए में हो जाता है, तो यहाँ अगर उसी लेवल के स्टूडेंट को यहाँ अगर खर्चा करना पड़ेगा तो वो करोड़ों में होता है। इसलिए ये बच्चे जो हैं बाहर चले जाते हैं पढ़ाई के लिए। आई हैव सीन इट अर्लियर आल्सो इन रशिया आल्सो, देयर आर लॉट ऑफ पीपल। देन उज्बेकिस्तान में काफी स्टूडेंट्स जाते हैं इंजीनियरिंग के लिए, मेडिसिन के लिए, और सिंगापुर में जाते हैं, यूके यूरोप में भी जाते हैं। यूके यूरोप में थोड़े कम जाते हैं, बट ये जगह चीपर होती है। देन गेट बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज विद द फॉरेन एक्सपोजर। तो फॉरेन की अगर डिग्री तुम्हारे पास हो तो एक्सेप्टेबिलिटी इन द जॉब मार्केट इज बेटर, तो जॉब मार्केट में उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें अच्छा ट्रेनिंग भी होता है। एक्चुअली इफ आई सी इट, and I have just recently visited some of the universities, their facilities, faculties are phenomenal. They are very good and they are very committed. If they are starting on 20th of September, means they are starting on 20th of September. ऐसा नहीं कि इंडिया में कि वो चल रहा है दुनिया भर, पता नहीं कब क्लासेस शुरू हो जाएंगे और फिर वो कॉपी करने का है और चोरी मारामारी करने का है, ऐसा कुछ नहीं चलता है वहाँ पे यूनिवर्सिटी में। They are very strict on the education. This we don't realize ki how good the education system is being run there. There's no political interference. There are no students unions and things like that who are politically motivated. Nothing of that kind. So this is a pure education. Therefore, the value of that particular university degree is better. They learn better, they understand better, they put into practice better. Okay, for possible business opportunity abroad, get a universal exposure and work experience. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि they are not very good in studies, but they are good in there are many faculties of the human life. They are good at it. तो किसी को बिजनेस करना है लेकिन उसको पब्लिक एक्सपोजर होना चाहिए कि दुनिया भर क्या चलता है, कैसे चलता है। तो कुछ बच्चे जो है लो लेवल के हैं, मतलब एजुकेशनली लो लेवल के हैं, बट दे वुड लाइक टू डू मच बेटर एंड देयरफॉर दे चूज टू गो टू सर्टेन यूनिवर्सिटीज, learn the environment and then get into an open field and they are very successful. अभी हालात में एक बच्चे 2-3 बच्चे ऐसे चले गए, पोलैंड में चले गए। पोलैंड में जाके उन्होंने डिग्री वगैरह ले ली, कुछ एमबीए वगैरह, 2 साल काम किया वहां पे और उसके बाद में मिडिल ईस्ट में चले गए और दे आर नाउ मिंटिंग मनी, दे आर वेरी हैप्पी. So such kind of opportunities come in front of people and they do it. So dream courses, some people have a dream course and they would like to study abroad. And these days the pattern also is changing. Now some of the universities, Indian universities also cooperating with the foreign universities so that partly they will teach them here, then send them abroad for 6 months, 8 months, etc. and teach them there and they get a degree combined from that university as well as this university, and that becomes an attractive proposition. Now obviously better pay. For example, if you get an European degree, suppose a doctor, Indian doctor, even if it is Indian doctor taught or got an admission in UK and he becomes a doctor with a degree from say Birmingham University. Now he goes in search of a job and one Indian doctor and one European, this doctor, getting a job in say anywhere in Middle East, the Indian doctor is given half the pay than this European doctor. So this phenomena, there is certain set of mind of people. There is some conviction that this particular doctor who is coming from the abroad is better, is there. And that is being exploited by the people from UK and Europe, etc. So they learn there and go and do the job in the Middle East, etc.
So there are varieties of reasons, attractions why children or parents would like their children to go abroad and study. Okay, next please. So there are if you go to the internet or if you take an assistance of any consultants, etc., they will tell you which are the countries which are easily, you can get the admission: Canada, Ireland, Australia, Germany, etc., and all that. So next, please. And what universities offer? Many universities, foreign universities, representatives, these days there is a trend. They visit Indian big cities. They advertise well in advance to counsel the students and their parents for the admission to their universities. Now, many of these universities, they charge a very high fee, and therefore they have a reason to come to India to catch the students. But this is a practice, and this practice is going on for quite some time. So if you are interested in going abroad, then you have to look out for such kind of representatives from the universities coming, and then you have to be present there to understand them. Some universities offer the free education with some nominal fees for a special facilities and hostel and the work for the definite hours. Students are allowed to work in wherever the job opportunities. Mostly it is in the hotels or some online institutes. There they work, but they are also given a certain fixed hours, so that the local people also have an opportunity to earn their bread. So, so that they can earn some money to sustain themselves in the university. Some universities also offer the scholarships. Then campus interview. This is also attractive things. So the say UK, for example, any university, campus interviews are conducted and the children are chosen and given the job. There are many private consultants to guide you in the admissions. So you can go to the internet and find it out. There are many consultants, but then there are pluses and minuses for these particular consultants. You have to understand them. Now, students also can get a loan from the financial institutes, especially the banks. ये लोन भी मिल सकता है हमको 30-40 लाख रुपए लोन देते हैं 10 साल का, या तो जैसे जैसे आपको जॉब मिल जाएगा तो आप उसको रिटर्न करना है। तो ये ट्रेडिशनली बहुत दिनों से चल रहा है, 15-20 साल से ये लोन की फैसिलिटी है, और काफी लोगों ने लोन लेके अपना एजुकेशन अब्रॉड पूरा किया हुआ है, लोन भी वापस कर दिया है। और ये एक अच्छा सिस्टम है ताकि सहूलत हो जाए, जो गरीब बच्चा है वो उसको ले सकता है और अपनी स्टडीज पूरी कर सकता है, तो ये अच्छा है। नेक्स्ट प्लीज। So some general rules that you should follow. क्या rules है, regulation है, क्या precautions लेने पड़ते हैं। Choose your program. अगर हमको horizon मालूम हो गया, opportunities मालूम हो गया, direction मालूम हो गया, तो हम लोगों ने किस यूनिवर्सिटी में कौन सा प्रोग्राम लेना है इसको सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद में रीड द रिक्वायरमेंट्स एंड डेडलाइंस केयरफुली। तो उसके एप्लीकेशन देने की लास्ट डेट कब है, कंसिडरेशन क्या है, उसके दूसरे और क्या एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं, क्या क्या प्रिपरेटरी वर्क करना पड़ता है, ये सबको जानना जरूरी है और उसको फुलफिल करना जरूरी है। राइट अ मोटिवेशन लेटर। सो इसको SOP भी बोलते हैं। तो मोटिवेशन लेटर लिखना पड़ता है, वो दिस पार्ट ऑफ द देयर यूनिवर्सिटी एंट्री सिस्टम। आस्क फॉर रिकमेंडेशन लेटर, ये भी अच्छे अच्छे लोगों से रिकमेंडेशन मांगते हैं ताकि आपके क्रेडेंशियल मालूम हो जाएगा। देन गेट प्रिपेयर्ड फॉर TOEFL और IELTS, these are the tests for the English language command and also some professional tests, etc. So these are getting done up. So translate and authenticate your documents. So ये सब करना जरूरी है। In general, American universities require international students applicants. Transcript, that means जो भी आपको कहना है उसको अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा, डिटेल्स लिखने पड़ेंगे। Standardized test scores, that is
aptitude tests, SAT and ACT, English proficiency test, TOEFL, IELTS, IETP, PT, ये सब बच्चे जानते हैं और एक दूसरे से बात करते रहते हैं और उनको मालूम है कि भाई कौन कौन से टेस्ट अपीयर होना पड़ता है, ऐसे लिखना पड़ता है, रिकमेंडेशन देने पड़ते हैं और वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। तो इसको नजर रख के हम लोगों ने 2-3 केस स्टडीज मैंने निकाले हुए हैं। तो नेक्स्ट प्लीज। तो रिदा तारिक अनवर खान साहब, मेरे ख्याल से तारिक साहब हैं यहाँ मीटिंग में। तो उनकी बेटी जो है ये ब्रह्मा एमरल काउंट में 6th फ्लोर पे रहते हैं और उनकी बेटी BE कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पुणे यूनिवर्सिटी से किया है उन्होंने। 4 साल का एक्सपीरियंस है HSBC टेक्नोलॉजी में और she has got the admission in Imperial College London or the financial technology in June 2022 recently. Next please. What is an Imperial College? We must understand also. This is a public research university in London. Its history began with the Prince Albert, consort of Queen Victoria, who developed his vision for the cultural area that included the Royal Albert Hall, Victoria and Albert Museum. These are all very famous in England. Natural History Museum and the Royal Colleges. And this Imperial College is one of them. So it's one of the very, very famous institute. The students who pass out, they become quite renowned in the future of their life, and they are well recognized, and therefore there is a huge queue and huge competition to get the admission in this particular college. So it becomes very prestigious once a child gets an admission, and it's a matter of pride for everyone. Next please. तो ये यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, मेन हॉल है, एडमिनिस्ट्रेटिव हॉल है. Most of the universities have a tower like this, and that really impresses you, and it is a kind of a landmark. And ये बहुत अच्छा लगता है, एक्चुअल देखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, इवन पिक्चर में भी बहुत अच्छा लगता है, और एक एनवायरनमेंट जनरेट कर देता है कि भाई यहाँ पढ़ाई होने चाहिए और कुछ नहीं, मस्ती बेस्ती कुछ नहीं करना है, या पढ़ना है सिर्फ. अच्छी अच्छी लाइब्रेरी होती है, अच्छी अच्छी फैसिलिटी होती है. इट्स वंडरफुल, द एटमॉस्फेयर इज रियली ग्रेट. नेक्स्ट प्लीज. ये उनके इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग है. नेक्स्ट. ये कैंपस है. दिस इज अ एरियल व्यू ऑफ द कैंपस. यू कैन सी हाउ नाइसली एंड ब्यूटिफुली all the facilities are laid down, and they're all walkable distances. Student doesn't have to go from one place to another place by bike or some vehicle, etc. It's all walkable. Even the hostels, they are very close by, and so you walk about 1-2 kilometers, etc., and there you are in the middle of the facilities. So the whole campus is only for teachers, those who are resident teachers, etc., and students and the faculties related to this. There are no commercial ventures here. There are no malls, no nothing of that kind of. Of course, for sustenance, whatever the small eating and all those kind of facilities are there. But the whole thing, the whole purpose is education, knowledge, and the whole atmosphere is just filled with this kind of things. So such kind of an atmosphere, brings happiness to the students. Next, please. So I had requested Rida and her father Tariq Khan Sahab, what advice she can give it to the new students. So उन्होंने लिखा है कि every university has a different academic and English language requirement. They ask you to submit your university transcripts, CV. ये CV मतलब बायोडेटा अपना खुद का, and personal statements. At Imperial College, they ask us a number of specific questions and not just one big personal statement. However,
I still think your personal statement should cover these prompts. That is, ये जो important points जो है जो cover up होनी चाहिए अपने personal statement में, ये points है motivation for undertaking this program कि क्यों करना चाहते हो तुम, क्या फायदा होगा तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे करियर बिल्डअप में, तुम्हारा गोल अचीवमेंट के लिए क्या तुम्हारे पास ये मोटिवेशन है कि ये तुम ये कोर्स करना चाहते हो। तुम्हारे नॉन एकेडमिक अचीवमेंट्स क्या है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक अचीवमेंट्स तो हमारे यूनिवर्सिटी के या बोर्ड के नंबर से पता ही चलता है, लेकिन जिंदगी सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं है। जिंदगी को सफल करने के लिए बहुत सारे क्वालिटीज की रिक्वायरमेंट है, स्किल की रिक्वायरमेंट है, लीडरशिप की रिक्वायरमेंट है, नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। और ये नॉन एकेडमिक अचीवमेंट जिसके पास नहीं होता है, वो बच्चा यूनिवर्सिटी में टॉपर है लेकिन एक्चुअल रियल लाइफ में फेलियर हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि नॉन एकेडमिक में बहुत अच्छे हैं और एकेडमिक्स में एवरेज हैं और बिलो एवरेज हैं, फिर भी वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो नॉन एकेडमिक नॉलेज इज इक्वली इम्पोर्टेंट एंड दिस इज व्हाट पेरेंट्स मस्ट अंडरस्टैंड। सिर्फ बच्चे के पीछे लग के हुए नंबर 1 आया कि नहीं, 95% मार्क आया कि नहीं, ये करते करते वो बच्चे को सिर्फ पढ़ाई 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 के पीछे लगा दिए और उसको ना तो खेलने दिया, ना तो लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करने के लिए, ना कोई बाहर जाने के लिए दिया है। अपने आप पे भरोसा नहीं उसको, खुद अकेला नहीं जा सकता, बैंक का काम नहीं कर सकता, ऑफिस में जाके ऑफिस के काम नहीं कर सकता, डर लगता है। तो ये सब हटना चाहिए। हमें चाहिए कि हमारे बच्चे है ना 100% सब जो स्किल्स जिंदगी को चलाने के लिए जो जरूरी स्किल है उसका वो अभ्यास करे। बचपन में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, 100 रुपए दे दो, जाके तू भाई घर का सामान लेकर आ, और फिर हिसाब किताब मांगो उसको और उसकी आदत बनाओ। तो ये जो चैलेंजेस है जिंदगी के वो बचपन में आ सकते हैं और पेरेंट्स ने इसके तरफ ध्यान देना चाहिए। सक्सेसफुल होने के लिए अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक नंबर्स you need other skill as well. This must be understood, remembered and practiced by all people. How would you contribute to the cohort and the community? मतलब अपने जो ग्रुप्स हैं, सोसाइटी है, इसको हम क्या किस तरीके से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ऐसे कम्युनिटीज को सब तरह का कंपटीशन कोऑपरेशन चाहिए होता है, जस्ट नॉट ओनली एकेडमिक्स। There are many features which are required और वो जरूरत होती है। How will you use this degree to make positive impact? तो ये डिग्री लेके तो आप करोगे क्या? इस सोसाइटी के लिए इम्पैक्ट करोगे, कुछ मदद करोगे, दुनियादारी के लिए मदद करोगे, क्या खुद का लिए खाली मदद करोगे? ये तुमने समझना जरूरी है और लिखना भी जरूरी है। How will this program help you to reach your career goal? तो अपना गोल हासिल करने के लिए ये डिग्री आपको कैसे यूजफुल होगी, ये समझना लिखना जरूरी है। Do you see any barriers that you may need to overcome to reach this goal? और आपके रास्ते में क्या क्या उलझने हैं या उसमें तकलीफ हैं, ये लिखना जरूरी है। And what skills will you need to develop these particular skills and level to achieve your goals? So some of these things must get reflected. Next, please. So she continues. ये लिखना बहुत जरूरी है कि जो भी हम लिखें वो ऑथेंटिक होना चाहिए। अगर एक भी चोरी पकड़ी गई, तुम गलत लिखा है और उसको पकड़ा गया, तो the whole thing gets vitiated and the foreigners don't like it, because if you have hidden something and given us a wrong impression, they immediately reject you. So you have to be very careful. बहुत ही सोच समझ के सही लिखना चाहिए। You can add what work you have done earlier. क्या काम किया पहले। What the university wants to see is that you have the skills and will to excel and achieve goals. तो यूनिवर्सिटी लोग क्या देखना चाहते हैं हमसे कि भाई तुम्हारे पास स्किल्स लेवल है जो सफिशिएंट है कि
जिसकी वजह से आप वो डिग्री पास कर सकोगे। और तुम्हारे पास एक विल है, तुम्हारी जो जिद है कि भाई ये मैं इसमें इस डिग्री में एक्सेल करूंगा, अच्छे तरह से मार्क्स निकल ले लूंगा, लोगों का कॉन्फिडेंस ले लूंगा, ये जिद होनी चाहिए। और गोल अचीव करने की अपने पास इरादा भी होना चाहिए और ताकत भी होनी चाहिए। So how your work in university will help develop your career and ambitions. तो ये पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई नहीं है कि मुझे जिंदगी में कुछ हासिल करना है, कंट्रीब्यूट करना है, तो ये भी समझाना जरूरी होता है यूनिवर्सिटी वालों की कि भाई हाँ तुम राइट ट्रैक पे हो या नहीं हो, ये वो यूनिवर्सिटी वाले समझ जाते हैं। तो इसके लिए क्या जरूरी है? डीप स्टडी ऑफ द यूनिवर्सिटी वेबसाइट हर एक यूनिवर्सिटी की होती है और बारीकियों में लिखा गया होता है कि भाई ये यूनिवर्सिटी क्या क्या इनके पास फैकल्टीज है, फैसिलिटीज क्या है और क्या करना चाहते हैं, ये मालूम होना चाहिए। उनके सेंस ऑफ वैल्यूज, बिकॉज ये वैल्यूज अगर उनके मालूम नहीं तो तुम गलत काम कर सकते हो वहाँ, जाने अनजाने। लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कि ये क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फैसिलिटीज क्या है इन द यूनिवर्सिटी, हाउ द करियर डेवलपमेंट ऑफ द पास्ट स्टूडेंट्स हैव टेकन प्लेस। तो मैंने देखा था अभी यूनिवर्सिटी में गया था बेलफास्ट में, तो बच्चों के कुछ तस्वीरें लगाई हुई थी और उन्होंने लिखा हुआ था कि ये स्टूडेंट्स इस साल का नंबर 1 स्टूडेंट था। क्यों नंबर 1 स्टूडेंट था वो नीचे लिखा हुआ था। और अंदर जाके देखा तो मैंने इस यूनिवर्सिटी से किसको किसको क्या पहुंच गए हैं ये बच्चे, मतलब क्या इंटरनेशनली नेशनली क्या अवार्ड्स मिले हैं इनको, कैसे मिले हैं, क्या फील्ड है, ये सब दिस आर ऑल मोटिवेशन। और ये बहुत जरूरी होता है ताकि बच्चे समझ जाए कि भाई यहाँ से भी गोल्ड मेडल्स मिलते हैं और बड़े बड़े मेडल्स मिलते आते हैं, अच्छा काम हो जाता है। Now, students pay a lot to get their statement of purpose, SOP, जो अभी रिदान जो बताया था ना डिटेल्स में, उसको लिखने के लिए कुछ बच्चे एजेंट्स के पास जाते हैं, but this can be avoided because there is enough of literature which is available on the internet और ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भी होते हैं। तो ये अगर आप देखो, पढ़ो और उसको अमल में लाओ तो ये पैसे बच सकते हैं। तो ये बातें हुई। नेक्स्ट प्लीज। तो ये है पेरेंट्स रिदा के और तारिक साहब और जसमीन से, तो दोनों भी बहुत मेहनत किया है इन्होंने, हमारे नेबर हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और अच्छा बच्चों को गाइड किया है। सो देयर कंसेंट आई हैव रिटन ऑल दिस, सो थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। The next one is next case study is Ariz Ahmed, son of Faiz Ahmed. He has passed 12th standard from Delhi Public School, Kuwait in July 2022 and is now admitted to BBS course at Queen's University, Belfast, UK. And he joined the college on 20th of September 2020. So who is this fellow? Next, please. So what are the efforts he and his family has done? So they are all desirous of making him a doctor. So he worked hard and he got in his 12th standard board examination 99% in biology and 95% in chemistry. So that has helped him really for seeking an admission. They had a great desire to study in the United Kingdom. So he appeared for the UK CAT, that is combined aptitude test, and cleared it with 2,550, 32 out of 3,200, which is about 80% marks. And he applied for the universities in the UK. He took training from the Chinese teacher for the preparation for the UK entrance test in medical schools, and he did well in the interview with the Belfast University because interview is very, very deep. The group of who undertake the interview of foreign students, etc., and they ask all kinds of odd questions. So you got to get prepared. And that's how he approached the Chinese teacher to
He is an ex-student of that particular university, and therefore he knew what are the expectations from the students and how he can fulfill those expectations. So he got that particular help, and therefore his interview was very well. So one fine morning, Queen University Belfast rang up to say that Aris has been offered a seat in the medical college at Queen's University in Belfast. So obviously there is a tremendous joy, and acceptance was immediately given. A request for the hostel accommodation was accepted by the university, and a letter from the university for his admission to medical school was sent to enable him to get visa to UK. And Aris appeared for the visa interview and got a visa for 3 months with the provision of biometrics. These biometrics are not conducted in the Kuwait, and therefore he has to go to the university where they will conduct the biometrics, and then they will issue a 6 years study visa. So this is what he had done. So he flew to the Belfast on 14th of September to join medical college, and he did all the joining formalities and attended his first class on 20th September 2020. So this is a short, but the amount of effort which he and his mother and father they have done for last 2 or 3 years is considerable. The whole house was only focused on his studies, what he wants, how he can do better, और ये सब करने के लिए पूरा घर का उसमें हिस्सा लेना बहुत जरूरी होता है. खैर कुछ बच्चे एक्सेप्शनल होते हैं, वो without support also they can get through. But the moral of the story is this is a very big competition, and it is not easy to get admissions like this. Next, please. So this is a Queen's University, the main administrative building. Next, please. This is a students' union building where the students exchange their views and thoughts, etc. It's a very important building. Next. This is a medical school. So very nice, big building, new building, and this is for medicine, dentistry, and biomedical sciences. Next, please. So this is a class which he has been attending now, and there is a library, biomedical library, big library, very nicely done up, and all kinds of varieties of things are there. So next, please. So these are the parents, Faz and Taran. So we are very proud of them that they have put in so much of effort to get the Aris into the school. They're staying here next to me, A204. So he's my grandson. So I am and my wife are equally proud of him. We visited the school since we were in England. So we visited him, and we found him that the only problem this boy has got is that he didn't know the cooking at all. घर में कोई बच्चे हमारे यहाँ तो उनको कुकिंग नहीं सिखाते, लेकिन वहाँ पे मेस नहीं होती, and you have to cook your own things. The poor fellow, at least about first 8-10 days, by the time mother taught him something to eat, etc., and then managed to get some food. Food outside is very expensive, so you need to cook, and they have common pantry, etc. 6 students staying in one flat kind of thing with a common kitchen and common eating place, etc. So everybody has to share, and everybody has to cook, and all that kind of thing. But now he's at ease. After about 2 months, etc., now he's at ease. And so this is one aspect which I think I would suggest to every parents who desire that their child to go abroad. They must teach them how to cook, how to survive, in fact, how to survive in cold, how to know how to understand the environment there, how to catch a train, how to catch an aircraft, how to book a taxi, how to get onto the road, how to see the map, GPS. Cooking is very, very important, because in foreign countries, there are no cooks available. There are no messes. Ready-made food, you can't eat more than
1 week or so. So you have to get the vegetables from outside, meat from outside, and start cooking it. So this is the lesson which we have learned, and it's a tough lesson. Next, please. There is another girl, Faiza Ali Awar Inamdar. Okay, her grandfather is known to be, and he is a forest ranger, and he is from Karnataka, and he did very well in his career, and now is running a big high school. So his daughter's daughter, Faiza, she has passed 12th standard from Bishop School, Pune, in July 2022 and admitted to IOPPN course at King's College, London. So let's learn something more about her. Next, please. तो ये लड़की है 12th standard arts ICSC board. She scored 99% overall with 100% in mathematics and psychology. She has a winning ability to speak in speech, projects, studies, UNO activities, good handwriting and clear thinking, early goal setting, facing odd situations, and find her own path are some of her good qualities. And this is what I am not saying. This is their teacher, our teacher. They have written this. Therefore, I am just only projecting, what kind of qualities a student should have, which are admired by the teachers and which are required for your progression of your career. This is what is been written here. She sought admission to the Institute of Psychology, Psychiatry and Neuroscience, that is IOPPN. That is the full form, that is Psychology, Psychiatry and Neuroscience at the King's College, London. This is one of the very prestigious course. Not many students can get into admission into this kind of a course. Got selected and got a hostel at the unit accommodation to Angel, London, and joined the institute on 20th September 2022. So these are the kinds of saga, kind of a big achievement students have done it. And to do this particular achievement, it is entirely the full family's involvement is there. The environment which they create at home and outside, the care they took, the focus the parents, guide them properly, protect them from, going here, there, etc. Because these days it's very easy to get distracted with the new gadgets which are floating around. So children can easily get distracted. But to be able to achieve certain aims in the life, you'll have to control your mind and body. Next, please. So something about the King's College, London. This is a public research university located in London. King's College was established by a royal charter in 1829 under the patronage of King George IV and the Duke of Wellington. In 1836, King's became one of the two founding colleges of the University of London. It is a top 3 London university and is placed 31st in the world according to the popular QS World University Ranking 2021. King's has a particularly distinguished reputation in humanities, law, the science, including the wide range of health areas such as psychiatry, medicine, nursing, and dentistry, and social sciences, including international affairs. King's has more than 27,600 students, of whom nearly 10,500 are graduate students, and from some 150 countries worldwide, and some 6,800 staff. That means you interact with 150 countries' children and understand them well, and improve your lifestyle. Next, please. So some of these pictures, King's College features. Next, please. Very attractive buildings.
The library, you can see what varieties of books, facilities. You get really drowned and you feel so good that whatever the connected subject matters, etc., referrals and references which are available on the call of your fingertips, and you can get the information. Next, please. So, what we have learned so far is that what is the trend of life, what we dream, and what we want to do. We try to understand what does the excellence mean. And so this is only understanding of what, but how to put it into practice, that is very important. And these are not great formulas. Actually, there are fundamentally few things which our religion has been always saying, that follow a righteous path. अल्लाह हमको रास्ता दिखा दे जिस पर लोग जो है ना अच्छे हो गए, उन्होंने जिंदगी में कुछ कमाया है, जिंदगी में जन्नत पाने के लिए उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, उस रास्ते को हमें वो रास्ता दिखा, ना कि बदी का रास्ता. So in every namaz we are trying to repeat this number of times. And this is what we must understand. This is really fundamental to the whole life, that the righteous life is the most important life, which is liked by the Allah, and therefore Allah will give you a success and excellence in that particular domain of the field. So let us understand few of the features. This is not complete by itself. There are many features, but the fundamentals, the basics, I think we must understand this, and therefore these few slides. Okay, next please. So what are the basic things? So one must have physical strength. The second is important is mental strength. But over and above this, these two are visible. Physical and mental strength, they are visible, they are detectable. Your body language, when you speak, this comes out. But the over and above, the spiritual strength is most important. When you want to do a great job, a big job, very prestigious, difficult job, then the help from Allah is required. And Allah will give help to the righteous people, those who are right people. They are doing the right things. And therefore, what is right, that we must understand and we must put into practice. It's not just that namaz padne se sab ho jata hai, but हर एक कुरान के एक एक आयत में जो मतलब है उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और उसको अमल में लाने की कोशिश. नेक्स्ट प्लीज. Now let's talk about physical strength. Now, how does one get the physical strength? Very easy. Some people it's very easy. Some people it's very difficult. But the fundamentals are only healthy body can have a healthy mind. So, Sir, sorry to interrupt, sir. Please. So, sir, due to the paucity of time, we are already over the time. So, can we please? Yeah, just few slides. Yeah, fast in it. Yes, please. Few slides. I'll just finish this. So, only healthy body can have a healthy mind. Regular exercises, agility is required, not bodybuilding. You don't have to go to the muscle building and gym and all that kind of thing. You must do the running part of it. Essential to have good food habits, avoid fast food, excess eating and wasting of food. Essential to have a peaceful good night's sleep and to be mentally fit and physically fit. So the formula is early to bed, early to rise, makes man healthy, wealthy, wise. Okay, so follow this. Play team games and develop leadership qualities in the healthy way. Next, please. Mental strength. This will increase the ability, and what is to be done is the weed out unnecessary issues. When you want to focus your mind, the unnecessary issues which connected with this thing you must know, and you must cut them off from your life. Remember and reproduce. It is easy, not easy to remember and reproduce. So you must read the chapter, find out what is the theme of it, close the book, write down, and try to put it on a piece of paper so that everything has gone to your mind. Comprehend situations, read minds of the people.
people who are around you, understand them, focus the mind. That is like a parrot and Arjun story that all of you know about it. So you have to only look at the eye of the parrot and not the rest of the things, so that you can hit the arrow right into the eye. Balance and composed mind, that is स्थित प्रज्ञ आदमी। जब खुशी बहुत ज्यादा आ जाती है तो उछलना नहीं चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि एक विकेट गिर गए तो क्या नाटक कर देते हैं सब प्लेयर्स मैदान में, और एक विकेट बोल्ड हो गया तो कितना नर्वस हो जाते हैं। ऑल दिस इज नॉट रिक्वायर्ड कॉल्ड फॉर, इट्स अ नॉर्मल गेम। यू शुड बी स्टेडी स्थित प्रज्ञ। हाँ, जैसे कि एक एलिफेंट जाता है वैसे। नेक्स्ट, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इज स्पिरिचुअल नॉलेज होना चाहिए, उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और उसको प्रैक्टिस में लाना चाहिए। these three things are, they are all joined together and you must do this very well. Next, so इसके लिए क्या करना है कि खुद की परीक्षा या जांच और मूल्यांकन होना चाहिए, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं SWOT एनालिसिस। S stands for strength, अच्छे गुण, W for weakness, कमजोरियां, अपॉर्चुनिटीज, उसको मौके का काबिज करने की कुवत, और थ्रेट्स को बोलते हैं डर। तो ये अपने खुद की एक एग्जामिनेशन होना चाहिए कि मेरे में ताकत क्या है, मेरा वीकनेस क्या है, मैं अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या नहीं, और मुझे डर किस बात का है। जिंदगी में आपका ध्येय क्या होना चाहिए, ये खुद ही डिसाइड करना है, अपनी फैमिली डिसाइड करेगी। पैसा चाहिए, ओहदा चाहिए, परदेश में काम चाहिए, कुटुंब के साथ रहना है या नहीं रहना है, देखो ये सब डिसाइड करना है, ताकि आप अपना ध्येय, और ध्येय भी कैसा होना चाहिए, नजदीक का होना चाहिए और दूर का भी होना चाहिए। आज कल क्या होना चाहिए, मतलब 1 साल में क्या होना चाहिए, 5 साल में क्या होना चाहिए, 10 साल में क्या होना चाहिए, ये हमारे स्टेजेस ऑफ थिंकिंग होना चाहिए। और हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। जो चाहत के काम होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं, इसलिए इसकी सोच होनी चाहिए, इसकी समझ होना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूँ क्या नहीं चाहता। और तकनीक या साइंस को मनुष्य की ताकत को, दिमाग को, परिस्थिति को, पैसों को काम में लाने के लिए, मतलब ये एक तरीका होना चाहिए कि हम अपने आप को कैसे असेस कर सकते। प्लीज, नाकामयाब का सामना, हर एक आदमी को नाकामयाबी तो आई रहती है कभी ना कभी जिंदगी में, लेकिन ये तो जिंदगी का सच है। उसका सामना कौन करता है, किस तरीके से करता है, और अगर ठेंच लग गई तो उससे क्यों लग गई, उसके कारण मालूम हो और उसको फिर बाद में रिपीट ना करे, तो उससे सीख जाता है आदमी। और सीखना बहुत जरूरी है, उसको ही तजुर्बा कहते हैं। लेकिन सहवासियों को, मतलब हमारे पड़ोसियों को, जो हमारे आजू इर्द गिर्द है, टीचर है, फ्रेंड्स है, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको दोष मत देना, और अपने आप को ठीक करने की कोशिश करना, और जरूरत हो तो माहौल बदलना, कार्य को बदलना, ये करने से आप नाकामयाबी का सामना कर सकते। नेक्स्ट प्लीज। तो कुछ मंत्र हैं कि अल्लाह में गहरा विश्वास होना चाहिए, अनडाउटेडली ऑल ऑफ अस नो दिस। माता पिता, शिक्षक और बड़ों का सम्मान करें और उनकी दुआ साथ ले ले। अपने चरित्र को सम्मान जनक बनाए, जैसे सच बोले, सच पर डटे रहे, वादा और इकरारनामे को निभाए, कभी झूठ गवाही मत देना, विचार और अर्थ से पैसों से भ्रष्ट मत होना, नाजायज रिश्ता, शरीर संबंध मत रखना। अब ये जो चीजें मैंने लिखी हुई है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल डिसएग्री, बोलेंगे क्या आज के जमाने में ऐसे चलता है क्या, और ऐसे चलेंगे तो हमारे होगा क्या काम कभी। लेकिन मैं बताता हूँ, आप चल के देखिए, और जब आप चल के देखेंगे तो आपको कोई भरोसा नहीं होगा, कि आपको अचरज होगा कि मैं ऐसा करके भी मैं अपना एम हासिल कर सकता हूँ, ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये अल्लाह की नेमत होती है, अल्लाह के डायरेक्शंस है कि ये जो चीजें मैंने लिखी हुई है उसको निभाए, उसको अमल में लाए, और हम ही खुद ही उसको समझते हैं कि नहीं होगा, ऐसे करने से दुनिया सारी बेवफा है, दुनिया सब खराब है, मैं अगर अच्छा आदमी हूँ तो कैसे चलेगा मेरा। तो नहीं भाई साहब, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि ये सब करके देखो आप, और आप
तरक्की जरूर करोगे. Next, please. So that's it. Thank you very much.